students, welcome you back to the Hans Commerce tutorial channel. Thanks a lot for watching my videos, giving the comments, subscribing my channel. Be in touch with this channel so that you can get a lot of knowledge on accounts, finance, commerce, management. So if you're not subscribed yet, please subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification. So in these lectures, we were discussing about investment management. So far we have discussed unit number 1, investment management, introduction, types of investment, all those things in the first unit. We have done the problems on calculating the return and risk of individual securities. Second unit, we have discussed about the fixed income securities, its valuation, how to calculate the value of fixed income securities like bonds and debentures, and how to calculate the returns, YTM, yield to return, coupon rate, all different types of return, yield to call, etc. Then duration, all these problems we have done, we have discussed a lot in second unit. In unit number 3, we have discussed about the common stock valuation, how to calculate the intrinsic value of share, what are the approaches for calculating the intrinsic value of share. That we have discussed, we have done the problems, so many problems we have solved on that unit number 3. Now we are moving on to the next unit called unit number 4, that is portfolio theory. Now, this unit number 4 is portfolio theory. The topics which we are going to discuss is what do you mean by the concept of portfolio and how to calculate the return and risk of portfolio. What are the objectives of portfolio management? What is the need of portfolio management? Then what are the different types of risks in portfolio? Then beta, concept of beta, Markowitz portfolio theory, assumptions of Markowitz and also limitations of Markowitz. These are the topics we will discuss in this unit. First of all, the concept of portfolio. Portfolio का मतलब क्या होता है? Portfolio means a basket of security. No investor will put all his funds in one security. That's why one saying is there in investment management that don't put all eggs in one basket. What will happen? If something goes wrong, all the eggs will get destroyed. So that's a general saying. The same saying will be applied in investment management. Don't put all eggs in one basket means don't put all your funds in one security. अगर एक आदमी के पास 10 लाख रुपीस सेविंग्स है तो पूरा 10 लाख रुपीस को एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता और नहीं करना चाहिए. So how he has to invest that 10 lakh rupees? He has to spread, he has to make a diversification. He has to invest his funds in different securities, in different avenues. So a combination or basket of security is called portfolio. अब एक आदमी है अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करा, कोई कंपनी में 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीदा, कोई कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा, कोई कंपनी में बॉन्ड्स है, कोई कंपनी के डिबेंचर्स है. इस तरह अपने पैसे को पूरा फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. नॉर्मली पोर्टफोलियो, द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज डिपेंडेंट ऑन द रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी. अब पोर्टफोलियो का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स विल मेक ए पोर्टफोलियो. वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स आर देयर हु डोंट हैव द पोर्टफोलियो, ओनली वन सिक्योरिटी. बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे रहती हैं जो अपने पास का पैसा सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं. ज्यादा नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स विल मेक ए पोर्टफोलियो. तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन द रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. That is the meaning of the term portfolio. Now next we are going to discuss about portfolio return and risk. Portfolio return and risk. Portfolio analysis determines the consideration of future risk of the portfolio and return of the portfolio. Now portfolio expected return. See here. Portfolio expected return is the weighted average return of the individual securities in the portfolio. अब पोर्टफोलियो में जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है, सपोज 5 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बना हुआ है ABCDE. ये 5 सिक्योरिटीज कंबाइन करें तो पोर्टफोलियो बन गया. अब पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज कंसिस्टिंग इन द पोर्टफोलियो. एंड portfolio variance
will be a little bit less than the combined variances of all the securities. अगर पोर्टफोलियो वेरिएंस अगर मालूम करना चाहे तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी लोअर देन द वेरिएंसेस ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिटर्न्स variances of the individual securities. This will happen because there is a covariance relationship between different securities. अलग अलग सिक्योरिटीज के वेरिएंस अलग अलग है, तो जब मिल रहे हैं तो देयर विल बी कोवेरिएंस बिटवीन द सिक्योरिटीज. दिस कोवेरिएंस विल ब्रिंग डाउन द टोटल वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. इसीलिए क्या होता है, इवन एन इन्वेस्टर कैन बी एबल टू इंक्लूड ए हाईली रिस्की सिक्योरिटी इन हिज पोर्टफोलियो. एक आदमी है, नॉर्मली एक सिक्योरिटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता क्योंकि उसका वेरिएंस ज्यादा है, उसका रिस्क ज्यादा है. लेकिन अगर वो पोर्टफोलियो बनाएगा तो वो रिस्की सिक्योरिटी को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकता. क्यों कर सकता? क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में कुछ लो रिस्क सिक्योरिटी भी है, कुछ हाई रिस्क सिक्योरिटी भी अगर आ गए तो दोनों कंपनसेट करके उसको ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी लोअर. So even high security, high risk security can also be included in the portfolio. That is the advantage. Now, since portfolio expected return is the weighted average return of individual security, we need two things. First, we need what is the expected return of each security and what is the proportion of funds, weights, proportion of funds invested in each security. तो हमको पोर्टफोलियो रिटर्न मालूम करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए. पहली चीज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी इफ ईच इंडिविजुअल सिक्योरिटी. सेकेंडली, वी नीड व्हाट इज द वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी. वेट का मतलब ये होता है हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन ईच सिक्योरिटी. अब पूरा में इक्वल भी रह सकता या अनइक्वल भी रह सकता. एग्जाम्पल ABCDE 5 सिक्योरिटी है. अब हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्वेस्टर एवरी सिक्योरिटी में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, या ऐसा भी हो सकता है ए सिक्योरिटी में 50,000, बी सिक्योरिटी में 10,000, सी सिक्योरिटी में 40,000, डी सिक्योरिटी में 20,000. लाइक द डिफरेंट अमाउंट्स ही हैज इन्वेस्टेड, these are the weights. Now we calculate the proportion weight. Then by using that proportion weight and expected return, we calculate the weighted average return of the individual, weighted average return of the portfolio. This is about portfolio return. Similarly, portfolio risk also we calculate. Now one more thing, अगर पोर्टफोलियो रिटर्न को हाई करना है तो इंडिविजुअल रिटर्न्स को हाई करेंगे. मैं इन्वेस्टर हूं, मैं ये चाह रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा होना. पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा तब होगा जब इंडिविजुअल एसेट्स के रिटर्न ज्यादा होंगे. कार्ड मिल सकता है क्या, पूछ रहा था. एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड का पूछो. एटीएम कार्ड का क्या है सब. हाँ, मोबाइल नंबर, कोई जो भी है इश्यूज के सामने बोलो. मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड होना है. मेरे को एटीएम कार्ड मस्त है बोल के बोलो. हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोर्टफोलियो रिटर्न. अगर पोर्टफोलियो रिटर्न को अगर ज्यादा चाहिए तो ऐसे सिक्योरिटीज को इंक्लूड करेंगे जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है. ABCDE ऐसे सिक्योरिटीज को चूज करेंगे जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है. जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न ज्यादा होगा तो नेचुरली द पोर्टफोलियो रिटर्न विल आल्सो इंक्रीज. बट व्हाट विल हैपन, nobody will suggest this proposition. Nobody will say this. Why? Because when we include all higher return security, risk will also be higher. Because higher the risk, higher the return. जब रिटर्न ज्यादा है सिक्योरिटी के ऊपर तो उसका मतलब यह हुआ कि रिस्क भी ज्यादा है. तो when we are including all higher return security, automatically higher risk will also come. So that is not suggested. Now objectives. Now how to
how to make a good return on portfolio? Make diversification. To reduce the risk, we have to make the diversification so that our risk will come down. Right? Now we will discuss about the objectives of portfolio management. Broadly, we divide the objectives into two, that is basic objectives and secondary objectives. The basic objective of portfolio management is to maximize the yield. Yield का मतलब होता है रिटर्न. एनी इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को रिटर्न चाहिए, यील्ड चाहिए. और यील्ड कैसा चाहिए? मैक्सिमम यील्ड चाहिए. आई वांट मैक्सिमम यील्ड. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द yield, and second objective is to minimize the risk, because always risk is attached with the yield. Higher the yield, higher the risk. Lower the yield, lower the risk. तो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि रिटर्न मेरे को ज्यादा चाहिए, रिस्क मेरे को कम से कम चाहिए. तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें रिटर्न भी ज्यादा रहना और रिस्क भी कम रहना. दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. नाउ विल कम टू द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. The objective of portfolio management is not only the basic of maximizing the return and minimizing the risk, but also here they are having the other objectives. The other objectives are, first one, regular return. The investor wants, that is portfolio should generate a regular return. Regular का मतलब ऐसा है फ्लक्चुएशन नहीं होना. आई मीन कभी आ रहा रिटर्न, कभी नहीं आ रहा, एक साल मिल रहा, एक साल नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं चाहिए. वी वांट ए रेगुलर रिटर्न, consistent return. The next one is stable income, not fluctuating much. कभी इनकम एक ही दम लो हो जा रहा, कभी इनकम बहुत हाई हो जा रहा, तो ऐसे पोर्टफोलियो को रिस्की पोर्टफोलियो कहते हैं. Our portfolio should generate a stable, uniform return. Next, an appreciation of capital. See here, पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसमें रिटर्न भी रहना प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी देयर. कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज अलॉन्ग विद द रेगुलर इनकम. एग्जाम्पल, अगर आप शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स के ऊपर रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा 25%, 20%, ये तो रेगुलर इनकम हो गया. तो मेरा ऑब्जेक्टिव खाली या डिविडेंड अर्न करने का नहीं है. माई ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर. मैं 1 लाख रुपीज के शेयर्स खरीदा, ये एक्सपेक्टेशन के 1 और 2 ईयर्स के बाद जब बेचूंगा तो मेरे को 3 लाख रुपीज आना. I want to 3 lakh rupees, that is a capital appreciation. So in between I am getting the return, but at the time of sale of the asset I should get capital gain. So there should be appreciation of value of the asset. Next, more liquidity. The portfolio should be such that easily we can change the form of the portfolio, composition of the portfolio. And a portfolio ऐसा बनाना कि उसके अंदर के securities easily liquid रहना. लिक्विड का मतलब इजिली कन्वर्टेबल इनटू अदर सिक्योरिटी और इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. नेक्स्ट वन इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, द इन्वेस्टर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. आवर इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी सेफ. देन लास्ट वन इज टैक्स बेनिफिट. Nowadays a huge tax is imposed on the return on investment on any income. Similarly, the portfolio should be made in such a way that we should get the maximum benefit from income tax, from tax point of view. So these are the secondary objectives of portfolio management. So what we have discussed so far, the meaning of the term portfolio, is a basket of securities, a combination of different securities is called a portfolio. Then portfolio return and risk. Portfolio return is the weighted average return of all the individual securities, where weights are the investment made, proportion of investment made in each security. Then portfolio variance is the combined variance of all the individual securities. Then we have discussed about the objectives. Now we'll discuss about the need for portfolio management. ये portfolio management का need क्या है, क्यों बनाना पड़ता है portfolio? Actually portfolio management is a process. ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट्स अ प्रोफेशनल जॉब. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज. बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए अबाउट मेकिंग द पोर्टफोलियो, अबाउट द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट
is a process encompassing many activities in assets and securities. It's a dynamic and flexible concept. ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ही डायनेमिक और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है विच इन्वॉल्व्स रेगुलर एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, जजमेंट एंड एक्शन. तो ये पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए you should have the ability to analyze the investment, to make judgment and to take the action. So all these things are required in managing the portfolio. So it involves construction of a portfolio based. So this portfolio management requires consideration of the construction of portfolio based on the objectives of the investor, the preferences for risk and return of the investor, then constraints of the investor, and apart from that the rate of return and risk, how much rate of return, how much risk the investor can be able to take. So the portfolio should be reviewed from time to time. एक बार पोर्टफोलियो बना दिए तो ये नहीं समझना चलो अपना काम हो गया, पोर्टफोलियो बना दिए, हम इन्वेस्टर बन गए और हमको रेगुलरली रिटर्न आएगा, हमारा रिस्क भी कम होगा. नो, टाइम टू टाइम वी हैव टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो, हैव टू बी जज्ड, इवैल्यूएट, एडजस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द मार्केट कंडीशंस. क्योंकि मार्केट कंडीशन से डायरेक्टली इफेक्ट पोर्टफोलियो पे होता है. मार्केट में कोई भी चीज हैपनिंग हो रही है, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द पोर्टफोलियो. सो portfolio management requires a constant judgment, analysis, keep a close watch on the market conditions, and the evaluation of portfolio is to be done in terms of target set for risk and return. एक इन्वेस्टर है, उन्हें टारगेट सेट कर दिया, मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, मैं इतना रिस्क ले सकता हूं, तो पोर्टफोलियो उसी तरह बनाना जितना वो रिस्क ले सकता. वी कैन नॉट मेक ए जनरलाइज्ड रूल. We cannot make a generalized rule that this much be the risk and this much be the return. No, it will change from investor to investor. Every investor will have different ability to bear the risk and different expectation of returns. So portfolio construction refers to allocation of funds in different securities. एक पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये होता है कितना कितना फंड कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, राइट? दैट इज द कंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाइल मेकिंग दिस portfolio, we have to understand what are the different types of risk attached in the portfolio. What are the different types of risk attached in the portfolio? First of all, what is a risk? Risk is the uncertainty of income and capital appreciation of or loss of both. So there is uncertainty of the income and capital appreciation. जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये श्योर नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, लॉस भी हो सकता, या कैपिटल अप्रिसिएशन के बजाय कैपिटल डेप्रिसिएशन भी हो जा सकता, देयर मे बी अ लॉस. सो दिस इज कॉल्ड द रिस्क अटैच्ड विद द इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की. कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दो, बगैर रिस्क के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता. एवरी इन्वेस्टमेंट विल बी रिस्की. द ओनली थिंग इज सम इन्वेस्टमेंट्स आर मोर रिस्की एंड सम इन्वेस्टमेंट्स आर less risky. And we know the general term, higher the risk, higher the return. अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क ज्यादा ले रहा तो डेफिनेटली उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, और जो इन्वेस्टर रिस्क कम लेगा तो उसका रिटर्न भी कम होगा. बट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, देखिए अर्लियर पुराना व्यू, ट्रेडिशनल व्यू ये था कि रिस्क इज बैड, वी शुड नॉट टेक द रिस्क. बट द प्रेजेंट जनरेशन, अगर कोई इन्वेस्टर बोलेगा आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, then he has to forego the return. He will not earn the higher return. जब रिस्क नहीं लेना चाहा तो फिर रिटर्न भी नहीं मिलेगा उसको, तो फिर रिस्क लेना चाहिए. तो फिर रिस्क कैसा लेंगे? रिस्क लेकर उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना. दैट इज द मेन थिंग इन द प्रेजेंट जनरेशन. रिस्क इज नॉट बैड, whether we like it or not, risk is always there in our life. So how to cope up with this life? We have to manage the risk. We have to control the risk. There are different techniques available. Different theory is available for managing, controlling the risk. The total risk of two companies will be different. दो कंपनीज का रिस्क अलग अलग है, लेकिन जब दोनों कंपनीज को मिला लेंगे हमारे पोर्टफोलियो में,
तो एक कंपनी का रिस्क कंपेंसेट करेगा दूसरे कंपनी को, तो हमारा ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी है, हाईली रिस्की कंपनी। नो इन्वेस्टर विल वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बिकॉज कभी रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा, कभी रिटर्न कम हो रहा, तो ऐसी कंपनी को कोई भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन एक इन्वेस्टर है, उन्हें बोला ये कंपनी में भी मैं डालूंगा, मैं रिस्क लूंगा। क्यों ले रहा? बिकॉज उसके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी है जहां पर रिटर्न बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। तो वन सिक्योरिटी इज देयर, रिस्क इज वेरी लेस, अनदर सिक्योरिटी रिस्क इज वेरी हाई। तो दोनों सिक्योरिटी को अगर पोर्टफोलियो में कंबाइन कर देगा, ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल कम डाउन। So there are two types of risk. So an investor should be aware that there are two types of risk: systematic risk and unsystematic risk. The systematic risk is market related risk, and this risk is concerned with the market problems like availability of raw material, government policies, tax policies, inflation, interest rate, financial risk. ये सारे रिस्क जो मार्केट से अराइज हो रहे हैं, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क आर कंपनी रिलेटेड रिस्क विच आर रिलेटेड विद द मिसमैनेजमेंट, इन्वेंट्री, accumulation of inventory, bad financing policy, डिफेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज। कंपनी के पॉलिसीज अगर गलत जा रहे हैं तो इसको कंपनी रिस्क कहते हैं। It is called unsystematic risk. Now these two types of risk must be understood and managed by the investor. अब कैसा मैनेज करेगा? The unsystematic risk or company related risk can be controlled, managed by diversification. डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं रखेंगे। वी विल मेक द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज, एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरह कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा डाइवर्सिफाई अगर करेंगे तो योर अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी रिलेटेड रिस्क विल कम डाउन। Then what about the systematic risk? Non-diversifiable risk. The systematic risk is called non-diversifiable risk. So how to manage this non-diversifiable risk? By a measure called beta. By using a measure called beta. तो बीटा को कैलकुलेट करके, बीटा को ऑब्जर्व करके ये सिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। Now we'll discuss about the concept of beta. What is this beta? Beta is a measure of systematic risk. Beta is a measure of systematic risk. So actually this is useful in portfolio management. The beta measures the movement of scrip of a company compared to the market movements. तो मार्केट से और कंपनी को कंपेयर करके हम ये मालूम करेंगे कंपनी इज आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग देन द मार्केट। यानी एक कंपनी मार्केट से बेटर चल रही है या मार्केट से वर्स चल रही है या मार्केट के साथ चल रही है। यानी कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट के परफॉर्मेंस से कैसा है, यह मालूम करने के लिए बीटा मालूम करते हैं। तो बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क वेयर वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का बीटा एक स्टैंडर्ड रख लेंगे 1। वी एज्यूम द मार्केट बीटा एज 1. Now we calculate the beta of the company returns. We calculate the beta of the company returns and compare the company returns with the market return to find out whether performance of the company is better than market or worse than the market. So the beta may be positive or negative. Positive beta का मतलब the company is going along with the market. मार्केट के रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी के रिटर्न्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट में रिटर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी के रिटर्न्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। इसको पॉजिटिव बीटा आएगा। नेगेटिव बीटा तब आएगा जब मार्केट में रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी के रिटर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो बीटा विल बी नेगेटिव, राइट। नाउ इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज द कंपनीज लाइक दिस। इफ द बीटा इज मोर देन 1 इट इज कॉल्ड एग्रेसिव कंपनीज। अगर कोई कैलकुलेटेड बीटा 1 से ज्यादा आ रहा तो ये कंपनी एग्रेसिव कंपनी है, मतलब ये कंपनी का रिस्क और रिटर्न ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मार्केट से। मार्केट से ज्यादा रिस्क है, मार्केट से ज्यादा रिटर्न भी है। ये रिस्की कंपनी है, एग्रेसिव कंपनी हुज बीटा इज मोर देन 1। अगर कोई कंपनी का बीटा लेस देन 1 है
तो इट इज कॉल्ड डिफेंसिव कंपनी, where the returns and risk of the company is lower than the market. मार्केट से कम जा रही है. अब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो 1 से कम का बीटा सेलेक्ट करेंगे, ऐसी कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका बीटा 1 से कम है. अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उन्हें बोल रहा है कि मेरे को रिस्क लेना ही है, मेरे को रिटर्न हायर, मैं थोड़े रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं होता, आई वांट ए हायर रिटर्न, तो वो लोग प्रेफर करेंगे दोज कंपनीज हुज बीटा इज मोर देन 1. अगर कंपनी का बीटा एग्जैक्टली 1 आ गया तो इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट. So how to calculate the beta? In the coming problems we'll discuss what is the method of calculating the beta. Beta को कैसा calculate करेंगे मैथमेटिकली, उसके formulas अब करेंगे, problems करेंगे. लेकिन apart from that, the daily beta calculations will be published in financial journals. Financial journals है, ये financial journals में even on the website we can get lot of calculations of beta, ready-made beta. आपको बीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरी डे बीटा ऑफ एवरी कंपनी इज पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल जर्नल्स एज वेल एज ऑन द नेट. यू कैन फाइंड द रेडीमेड बीटा. That's all. So we have completed concept of beta. The next concept we discuss about Markowitz portfolio theory. Markowitz portfolio theory. See, in the 1950s and early 1960s, there was a much talk in investment community about the risk. 1950s और 60s में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था किस बारे में, पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कैसा करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क. और बगैर पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करें वी कैन नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो, वी कैन नॉट बी एबल टू जज द पोर्टफोलियो. So there should be a method to calculate the risk of a portfolio. So, but there was no specific measure to calculate the risk. To build a portfolio model, however, investor has to quantify the risk of variables. Portfolio बनाने के लिए उसको risk calculate करना must है. The basic portfolio model, सब में पहला basic portfolio model जो बनाए, वो बनाने वाले हैं Harry Markowitz, who derived the expected return and of a portfolio of assets and expected risk of the portfolio. तो हैरी मार्कोविट्स ये आदमी एक थ्योरी बनाया, पोर्टफोलियो मॉडल बनाया, हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड वेरियंस. वेरियंस इज द रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसा कैलकुलेट करने वाला पहला मॉडल जो बना वो हैरी मार्कोविट्स बनाया है. Markowitz showed that the variance of the rate of return was meaningful measure of portfolios under a reasonable set of assumptions. इन्हें जो फॉर्मूला हैरी मार्कोविट्ज जो मेथड दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस मालूम करने का, ये फॉर्मूला, ये मेथड ही हैज गिवन अंडर सेट ऑफ assumptions. उन्हें कुछ assumptions दिया हैरी मार्कोविट्ज, वो assumptions के बेसिस के ऊपर वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द portfolio. That is why Markowitz portfolio theory is also known as mean variance portfolio theory. ये Markowitz theory का नाम ही रख दिए थे mean variance portfolio theory, क्योंकि ये portfolio theory में हम mean और variance, mean जो होता वो expected return है और variance जो है वो risk है. तो return और risk दोनों calculate कर रहा है ये portfolio theory. That's why it is called mean variance portfolio theory. In 1952, Harry Markowitz has published a landmark paper that is generally viewed as the origin of modern portfolio. तो 1952 में एक लैंडमार्क हो गया, एक पेपर सबमिट किया हैरी मार्कोविट्स और वो पेपर में उन्हें कंप्लीटली डिस्क्लोज किया है हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस ऑफ दिस पोर्टफोलियो. देन ही हैज गिवन द मैथमेटिकल फॉर्मूला. अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. तो व्हाट आर द assumptions अभी बताओ. मार्कोविट्स थ्योरी जो है, तो मार्कोविट्स जो फॉर्मूला अप्लाई किया है टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन सम assumptions. assumptions के ऊपर उन्हें बता रहा है, ये assumption के बेसिस के ऊपर इसका ये थ्योरी है कि हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. So what are the assumptions? The first assumption says investors are rational. The investors are rational. What do you mean by rational?
A person is said to be rational when the person will think a lot before taking any decision. कोई